Dr. Vishwaraj Singh, good afternoon. Welcome to the live stream. It's 3 o'clock. Flight वालों का flight वालों का So we will wait for another couple of minutes. So we will play this live English और हिंदी English में बात करेंगे. So it can reach out to people who do not speak English. So welcome all, and we start on this very important, and today being the Autism Day. Oh, I am not audible. Is it better for him? Just put in a thumbs up if you can hear me. Dr. Navneet, welcome. Good to see you. Dr. Disha, can you all hear me, please? Please give a feedback. Not audible. What can we do? Is it better now? Mehul Patel. Farheen Chishti, can you hear me? On the YouTube, Preeti, can you hear me? Okay, wonderful. I'm just checking with Insta. Okay. Now can you hear me? Please say if you can hear me. Dr. Preeti can hear me well on YouTube, but Insta there seems to be some problem. If that is the case, then we will just log out and log in. Just give me a confirmation, please. Still not audible. Okay, I will just log out from Insta and again join in. So please stand by and rejoin back again. So we are just rejoining back for the audio issues. Hello, can you hear me? Dr. Sonal, Dr. Disha, can you hear me, please?
Wonderful. Thank you so much, Dr. Keyur, for confirming. So good afternoon all. Just 30 seconds more before we get into the topic. ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. वेलकम ग्रीष्मा. सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस. थोड़े सवाल आप पूछ सकते हैं, तो वहीं से शुरू करेंगे आगे हमारी बातें ऑटिज्म के बारे में. आज ऑटिज्म वर्ल्ड ऑटिज्म डे है, और सबसे अच्छी बात ये दिन पे होगी कि हम जितना अवेयरनेस होम्योपैथी के बारे में और ऑटिज्म के बारे में हम कर सकते हैं, उतना लोगों के लिए बहुत बहुत फायदा होगा. क्योंकि होम्योपैथी मेरे आज ऑलमोस्ट 12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस ऑटिस्टिक बच्चों के साथ का बहुत बहुत पॉजिटिव रहा है. बहुत सारे पेशेंट्स को, बहुत सारे पेरेंट्स को इस हीलिंग माध्यम का फायदा हुआ है. तो इसे हमें और आगे बढ़ाना है, लोगों को और बताना है कि होम्योपैथी क्या कर सकता है ऑटिज्म में. तो सबसे पहले जानना है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसे स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्यों कहा जाता है. स्पेक्ट्रम मतलब अगर हम देखें तो हमने देखा रहेगा कि लाइट का भी स्पेक्ट्रम रहता है. जैसे रेनबो देखते हैं, दिखता है व्हाइट लाइट, लेकिन होते हैं 7 रंग, और ये 7 रंगों का जो कॉम्बिनेशन है, इससे हमारा स्पेक्ट्रम बनता है. एक ब्रॉड एरिया होता है. तो उसी तरह ऑटिज्म में उसके जो सिम्टम्स है, उसका कॉम्बिनेशन होके बहुत सारी वैरायटी क्लिनिक में हमें दिखती है. कोई बच्चा होगा जो ऑटिस्टिक, जिसे डायग्नोस किया रहता है ऑटिज्म के साथ. कोई बच्चा हाइपर एक्टिव होगा, कोई बच्चा ऑटिज्म में आएगा तो उसे लाइट सहन नहीं होगा. दूसरा बच्चा होगा को जो सिर्फ लाइट्स को देखते रहेगा. तीसरा बच्चा होगा वो सिर्फ फ्लैप करते रहेगा, अपने हाथ ऐसे ऐसे फ्लैप करते रहेगा. और चौथा बच्चा रहेगा जो काफी ब्रिलियंट होगा, बट फिर भी उसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसीज का डायग्नोसिस होता है. तो ये हम देखते हैं कि जैसे हमारे अब ये वापस कोविड का समय आ गया है. तो कोविड में, या अगर मलेरिया देखे, टाइफाइड देखे, डेंगू देखे, तो 4-5 सिम्टम्स होते हैं. उसी के साथ सब पेशेंट्स को एक स्टैंडर्ड, clinically there is a standard, almost a standard picture with minimum variation. बट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में ये चीज नहीं होती है. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में ये 7 रंग इस तरह से घुल मिल जाएंगे, कौन से रंग का ज्यादा शेड होगा, उससे हमारा क्लिनिकल पिक्चर, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन रहता है. फिर भी ऑटिज्म में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इज कि सोशल डेफिसिट्स एंड रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर. सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी. रेसिप्रोसिटी मतलब अगर मैं आपको हाय बोलूं तो आप मुस्कुरा के मुझे वापस हेलो कहते हैं. इसे हम रेसिप्रोकल एक्सचेंज कहते हैं. और ये एक्सचेंज ऑटिज्म में नहीं रहता है. सबसे मुश्किल बात यह है कि अगर हम ऑटिस्टिक बच्चों को देखें और नॉर्मल बच्चों को देखें, तो नॉर्मल बच्चा जब जन्म से लेके पहले 3 साल में
आप देखोगे कि मोटर डेवलपमेंट होता है सबसे पहले, फिर होता है हमारी समझ शक्ति जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, और तीसरा होता है सोशल इंटरैक्शन। तो ये सोशल इंटरैक्शन सबसे ज्यादा ऑटिस्टिक बच्चों में इम्पैक्ट करता है। तो जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, तो नॉर्मली पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ये कुछ सुनता नहीं है हमारी, एंड दैट इज द एरिया ऑफ कंसर्न। काफी बार ये एरिया ऑफ कंसर्न है, ये भी पता लगाना और उसको एक्सेप्ट करना पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता है, और अर्ली ऑन डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल होता है कि इसे हम क्या कहें, अगर ये रोग है या नॉर्मल डेवलपमेंट है। स्पीच डेवलप नहीं होती है काफी बच्चों में। तो नॉर्मली जब पेरेंट्स लेके जाएंगे अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास, कभी कभी पीडियाट्रिशियन के पास, और बोलेंगे ये बच्चा बोल नहीं रहा है, अब 3 साल का हो गया अभी तक बोल नहीं रहा है, क्या करे। सो काफी बार रिस्पॉन्स ये आता है कि रुकिए, वी विल वेट एंड वॉच एंड सी, अगर ये डेवलपमेंट का वेरिएंट है, नॉर्मल डेवलपमेंट का वेरिएशन है, हो सकता है, बट इसमें काफी समय निकल जाता है। तो वी एज प्राइमरी हेल्थ केयर गिवर्स इज टू गेट ए रेड अलर्ट। ये अलर्ट होना जरूरी है कि हमारी अवेयरनेस हो कि ये बच्चों को ऑटिज्म हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी अगर हम जल्दी रेज कर सकते हैं, तो आगे जो भी इंटरवेंशन करना है, जो भी ट्रीटमेंट शुरू करना है, जो भी मैनेजमेंट शुरू करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक अगर हम ये चीज को परख नहीं पाएंगे, इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, what we call in clinical parlance, as primary health care givers, if we are not having a clinical suspicion, तो बहुत समय निकल जाता है। दूसरा पहलू ऑटिज्म का यह है, और बहुत बहुत महत्व का पहलू है, कि ये एक सिर्फ न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम ही नहीं है। डेफिनेटली एक न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, बट उसके साथ साथ एक साइको सोशल प्रॉब्लम भी है और एजुकेशनल प्रॉब्लम भी है। तो इस डिजीज के अगर हम 360 डिग्री डायमेंशन समझ पाए, if we understand the 360-degree implication of this issue and identified very early, then we are doing a big service to society and above all to the families of these children. तो ये बात पे मैं क्यों इतना भार दे रहा हूं कि आप एज काफी डॉक्टर्स है, काफी मेरे कोलीग्स है, मेरे दोस्त है यहाँ पर, इनको मैं मेरा एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर रहा हूं कि अर्ली इंटरवेंशन इज द की थिंग इन ऑटिज्म। इसको हमें भूलना नहीं है। द अर्लियर यू डायग्नोज, द अर्लियर यू इंटरवीन, द बेटर इज द आउटकम। एस्पेशली जब होम्योपैथिक इंटरवेंशन करते हैं, जब ऑक्यूपेशनल थेरेपी का इंटरवेंशन करते हैं, जब सेंसरी इंटरवेंशन करते हैं, उसके लिए अर्ली इंटरवेंशन जितना जल्दी हो सके उतना। काफी बार हमने देखा है ये
कि parents and society and the family together are in denial कि नहीं ये कुछ नहीं है, इसे कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, उसमें काफी समय निकल जाता है। ऑलरेडी ये कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए, अर्ली डायग्नोज करने के लिए क्लिनिकल अवेयरनेस की जरूरत है। एंड सेकेंडली फैमिली के साथ कैसे डील करें, ये भी एक बड़ा स्किल है। क्योंकि आप सोचिए कि काफी बार ऑटिस्टिक बच्चों में आप देखोगे कि दिस चाइल्ड इज बॉर्न with lot of difficulty, with mother having problem in conceiving, and all means of conceptions are applied, all hormones, drugs, so many things are given to these pregnancies, and these pregnancies have a greater chance of giving birth to a children or to a child with autism spectrum disorder. अब आप समझ सकते हैं कि माँ बाप ने, पूरी फैमिली ने बहुत सारा समय, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारा पैसे डालकर ये प्रेगनेंसी को बचाया है, ये प्रेगनेंसी को वायबल बनाया है, और भगवान ना करे you are facing, the parents are facing with this issue. It is almost catastrophic for the patient. And one needs to have tremendous amount of empathy, compassion, yet at the same time you have to be clinically extremely alert and clinically skillful, not only in dealing with the patients but prescribing homeopathically for these children. So this is the dimension that one needs to comprehend as homeopaths. It's a lot of you, my friends, my students are here. So I will keep on emphasizing this aspect. और अगर आप parents है यहाँ पर, या relatives है जिनके family में this unfortunate disease is there, then one needs to understand that support as a clinician, support as a society, support as a family to this couple with this child is utmost important. अच्छा, ये सपोर्ट की बात, आज होम्योपैथी की बात कर रहा है तो मैं सपोर्ट की क्यों बात कर रहा हूं? तो देखिए, एज होम्योपैथ्स वी आर होलिस्टिक हीलर्स. We will consider every possible dimension that can be influenced in helping the child suffering from autism. So the most primary requirement is to nurture support from the family, you as a clinician, and we as a society as a whole needs to support these children. Once the support is garnered, अगर support है तो मेडिकल इंटरवेंशन का आउटकम भी बहुत बढ़िया होता है. बेस्ट रिजल्ट्स जो मैंने देखे हैं ऑटिज्म में, वो उसी फैमिलीज में देखे हैं जहां पर बच्चों को एक्सेप्ट किया गया है, पेरेंट्स हैव एक्सेप्टेड दैट देयर इज अ प्रॉब्लम और इसको इंटरवीन करना है. The outcomes are really, really wonderful. So क्या आउटकम हो सकता है होम्योपैथी के साथ? तो मेरा अनुभव ये रहा है कि माइल्ड टू मॉडरेट autistic children can come out of the spectrum completely. This is very important to understand.
that this is the potential of homeopathy in cases with mild to moderate autism. In children with severe autism, what we have experienced is that they become definitely more manageable. They may come out of the spectrum, यानी ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम में नहीं है, बट नॉर्मली याद रखना है कि जब बच्चों को ऑटिज्म होता है, इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, तो उसके साथ साथ 70% बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के भी शिकार होते हैं. इसे हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं. सो ये कोमॉर्बिडिटी बाद में डिटरमाइन करता है कि कितना ट्रेनेबल है बच्चा या कितना फंक्शनल है, कितना एजुकेबल है. तो ये एक बात हो गई. जो हम नॉर्मली ऑटिज्म की बात करते हैं वो प्राइमरी ऑटिज्म की बात करते हैं. प्राइमरी ऑटिज्म मतलब क्या कि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है. जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, जिसे डायग्नोसिस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसके अलावा और कोई भी डायग्नोसिस इन्वॉल्व नहीं है. तो largely this is the kind of population affected with autism will be a primary autistic children. But more complicated ये है वो जिसे हम बोलते हैं secondary autism. Now this secondary autism is a very complex problem. तो मतलब क्या? Say for example एक जीन डिफेक्ट है, एक मेटाबॉलिक पाथवे में प्रॉब्लम आ गया है. तो जब ये मेटाबॉलिक पाथवे में प्रॉब्लम है या एक जेनेटिक डिफेक्ट है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो, तो इसका जो प्राइमरी प्रॉब्लम, जो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि मेटाबॉलिज्म पाथवेज में प्रॉब्लम है जिसके कारण ऑटिज्म डेवलप हुआ है. ये समझना बहुत जरूरी है. प्राइमरी फर्स्ट प्रॉब्लम है कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है या देयर इज अनदर जेनेटिक इशू. इसके बाद ऑटिज्म उसका एक भाग है. तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम अगर हो फॉर एग्जांपल, तो आप देखोगे कि ऑटिज्म उसका एक भाग है. उसके अंदर आपको बहुत सारे दूसरे इश्यूज भी मिल सकते हैं. लिवर प्रॉब्लम मिल सकता है, स्किन प्रॉब्लम मिल सकता है, हार्ट प्रॉब्लम मिल सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स मिल सकता है. ऑटिज्म is one small part of the total syndrome, and इसको समझना बहुत जरूरी है कि दोनों की अप्रोच कंप्लीटली अलग हो जाएगी. ट्रीटमेंट वाइज भी, होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए भी अलग हो जाएगी. एंड सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि काफी बार ये जो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स है उसमें कहीं ना कहीं कुछ रिप्लेसमेंट की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है बायोटिनिडेज. ये एंजाइम है, बायोटीन को मेटाबोलाइज करता है. बायोटिनिडेज डेफिशिएंसी, जिसके साथ तो ऑटिज्म एक स्मॉल फ्रैक्शन है पूरे सिंड्रोम का. तो ये चीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बायोटीन को रिप्लेस करना है और बहुत सारा इंप्रूवमेंट मिल जाता है आपको. तो जब तक हम प्राइमरी इशू नहीं समझ पाते हैं, स्पेशली ये कॉम्प्लिकेटेड ऑटिज्म में, तब तक काफी बार ट्रीटमेंट भी मुश्किल होता है. बट नेचर इज काइंड and these cases are very very
टाइनी. एज यू ग्रो इन योर एक्सपीरियंस तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी आने लगते हैं. सो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ हम होम्योपैथी दे दें तो ठीक हो जाएगा, दूसरी कोई चीज की जरूरत नहीं है? क्या सिर्फ हम होम्योपैथी दे दें तो ठीक हो जाएगा, दूसरी कोई चीज की जरूरत नहीं है? कभी कभार माइल्ड केसेस में हमने देखा है कि कभी कभी, जैसे मैं बता रहा था कि ये इट इज अ साइकोसोशल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम, इट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. So many times parents cannot afford doing a therapy which is going to cost you 25 to 30,000 rupees a month. तो काफी बार ऐसा हमने देखा है कि जब पेरेंट्स दूसरा ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं और वो लोग सिर्फ होम्योपैथी लेते हैं, तो हमने काफी इंप्रूवमेंट देखा है. बट ए रूल ऑफ थंब एंड एज अ ब्लैंकेट रूल, सभी ऑटिस्टिक बच्चों को occupational therapy, sensory integration as required is our recommendation. स्पीच थेरेपी कभी कभी बोलते हैं लोग, बट स्पीच थेरेपी कब शुरू करना है ये इंपॉर्टेंट है. एबीए शुरू करते हैं तो ये दूसरे ऑक्सिलरी ट्रीटमेंट्स की जो हम बात है, तो दोनों अगर साथ में होते हैं तो इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी और बहुत मच हायर, much higher level. So our recommendation always is therapy बहुत जरूरी है. और अगर बच्चा काफी the grasping has improved, then we will also recommend special education for these children. So this is what is to grasp about autism. I am happy to pick up some questions. बहुत सारे मेरे मित्र हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो अगर कोई सवाल अगर आप पूछो एनी क्वेश्चन, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प. पूछो एनी क्वेश्चन, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प to all of us. You want to even share your experience, some difficulties, even I some parents also here, then we will go further. Otherwise we'll get into a lot of technical aspects. Dr. Riddhi, मेडिसिन फॉर ऑटिज्म, जैसे जैसे होम्योपैथी का स्टैंडर्ड रूल है कि हम इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन है, करेक्ट? तो उसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, उसमें एक्स दवाई चलती है, ये सबको दे, ऐसे नहीं होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जैसे मैंने बताया राइट एट द बिगिनिंग दैट इट इज अ स्पेक्ट्रम. सो बहुत सारा क्लिनिकल वेरिएशन होता है, इवन हिस्ट्री बहुत सारों की अलग अलग होती है. सो इन दिस सिचुएशन a detailed homeopathic history which includes the history from the birth, केस कैसे प्रोग्रेस हो रहा है और आज ये केस में क्या क्या चीजें दिख रही है, ये सिम्टम्स हैं, जो साइंस है. हेलो डॉक्टर प्रवीण, गुड टू सी यू. हाँ, आई विल कम टू योर क्वेश्चन. सो
So sorry, I missed my track. Yes, so we are individualized medicine. We will need to get into the individual. Then the second question, GFCF diet is mandatory. Well, Mehul, this dietary I have not enforced my patients, but always a casein-free diet is welcome, and I tell them not avoid chocolates and avoid caffeine, colas, and if possible a casein-free diet. Some patients are able to do it, some are not able to do it. So making things mandatory makes life difficult for a lot of patients. So recommended, not mandatory, right? Dr. Praveen, my yes, so my experience now has been lot with LM potency for the homeopaths here, and I have had two groups of patients in LM potency. One group of patient is very sensitive to LM potency. For example, if I am giving them every day single dose, they come up with aggravation, and then I have to bring down the repetition to maybe once a week. They are so sensitive. And the other is the one who will tolerate the LM potency repeating every day once and every 30 days going to the next LM potency, and the response has been wonderful. So I have, and this experience has been not just with autism, but it has been also with other neurodevelopmental problems. Two very distinct groups I am able to find out. One which are very sensitive to LM potency and they cannot tolerate everyday repetition. You have to bring down the dose to maybe once a week, and that helps them. And the other, like I said, that they will tolerate what we do routinely in LM potency, starting with LM1, going every day. After 30 days, go to LM2. So I hope that throws some light, Praveen. Then, what is another important part with this autistic children is concurrent infections, especially respiratory tract infections. So ये respiratory tract infections को handle करना बहुत जरूरी है. And as we progress in our treatment, we are able to see that these infections start reducing in intensity and in frequency also. So नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है और काफी बार पेरेंट्स भी मुझे पूछते हैं कि ये कोर्स कितने टाइम का है, और ये सबसे मुश्किल, हेलो ब्रिजेश, गुड आफ्टरनून, ये सबसे मुश्किल सवाल है, कितने समय का कोर्स है. सो यहां पर आई नॉर्मली से कि इंप्रूवमेंट is very distinctly visible in 3 to 4 months, and the improvement keeps on happening for many years to come. So we have had patients who have followed up with us for 7 years, 8 years, 10 years, and the beauty is they still continue to improve. So ये बात समझना जरूरी है as parents or as relatives or even as doctors, that it is work in progress. स्पेक्ट्रम में से बाहर निकलने को मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट 3 to 4 years it will take, डिपेंडिंग ऑफ कोर्स की स्टार्टिंग कहां पर हुआ, क्या लेवल ऑफ डिसेबिलिटी है. Yes, so less than 1 year, Dr. Digma, this is a very, very nice question. And this is in fact the challenge for us as doctors and
as a family, it gets very difficult to diagnose this problem before 1 year. But as clinicians, if the child is not giving a social smile, this is the thing that will raise suspicion. This is number one. Number two, the child does not recognize the parent or the caregiver in the family members. If these two things are present, then you can be suspicious of autism. And little more technical part, if I were to tell you, there is a scale called DASI, DASII. तो जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, it is a developmental assessment scale. So you can pick up autism even in infancy, and if that is done, this is the best time to start any and all intervention. So Dr. Digma, I hope I have been able to answer your questions. Does that satisfy you? Okay. Any other question? Which exercise is best for autistic child? So now again, what is needed for that autistic child will depend. For example, there are children who will not tolerate brushing the teeth because of oromotor sensitivity. So one of the biggest, because of oromotor sensitivity. So one of the biggest chunk of autistic children is sensory disintegration. What is the meaning of sensory disintegration? So थोड़ा मैं डिटेल में जाऊंगा बिकॉज बहुत सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर. तो जब the child is in the womb, the first system, neurological system to be developed is the sensory system. मतलब हम दुनिया को फील करना ऑलरेडी हमारे मदर के वूम में हम दुनिया को फील करते हैं, एनवायरनमेंट को फील करते हैं. उसके बाद आफ्टर द बर्थ कम्स मोटर, मतलब चलना शुरू करते हैं और बोलना शुरू करते हैं. उसके पहले हम सुनते हैं, फील करते हैं, राइट? तो ये सेंसरी इंटीग्रेशन, मतलब अगर आपको कोई साउंड स्टिमुलस आता है तो वो साउंड स्टिमुलस को आप एक्सेस करते हैं, फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. अगर हार्श साउंड है तो करते हैं, फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. अगर हार्श साउंड है तो बच्चा रोने लगेगा, डरेगा. अगर प्लेजेंट सूदिंग साउंड है तो चिल्ड्रन गो ऑफ टू स्लीप, म्यूजिक को भी रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट? तो ये सेंसेशंस आ रहे हैं हमारे सेंसेस से, हमारे 5 सेंसेस. एंड देन देयर इज ग्रेविटी, जिसको भी सेंस करता है हमारा इनर ईयर. तो ये सभी चीजों को जिसे हम बोलते हैं कि ये इंफॉर्मेशन गैदर करने की सिस्टम्स है, रेडार्स है हमारे सिस्टम के. अब रेडार सब सिग्नल पकड़ रहा है, बट हमारा ब्रेन है, ये सिग्नल्स को प्रोसेस नहीं कर पाता है. एंड वियर्ड रिएक्शन यू गिव, तो इसे हम सेंसरी डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं. तो काफी बच्चों में अलग अलग प्रकार के 5 सेंसेस है. तो पांचों सेंसेस में अलग अलग 5-6, 6th इज द जो वेस्टिबुलर बोलते हैं, हम ग्रेविटी को फील करते हैं, उसे भी एक सेंसरी स्टिमुलस बोलते हैं. तो ये चीज को ये नहीं कर पाते हैं, या दे नीड इट लॉट मोर ऑल द टाइम. सो जो बच्चा रहेगा कि लाइट, दे आर फैसिनेटेड बाय लाइट, तो सब लाइट्स को लिफ्ट के सामने देखेगा और लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, खुला होता है, और यू कैन सी दैट लाइट शेड्स आर चेंजिंग. सो यू विल फाइंड लॉट ऑफ चिल्ड्रन just staring into the lift or looking at the legs of the animals because the light flickers, right?
सो अगर वीडियो भी आप देखेंगे यूट्यूब वीडियो, तो वो एनिमल्स चलते उनको देखते रहते हैं. तो दिस चिल्ड्रन विल नीड लिटिल डिफरेंट exercise compared to children who have a problem with too much auditory oversensitivity, जिसे हम ऑडिटरी क्लोजर कहते हैं. मिक्सर का आवाज आ गया, ऐसे करेंगे. तो मेहुल, देर इज नो स्टैंडर्ड आंसर. जो बच्चों को टच सहन नहीं हो पाता है, तो उनको उस टाइप का एक्सरसाइजेस कराते हैं. जैसे बॉल बाथ में बिठाएंगे, प्लास्टिक बॉल्स रखेंगे बड़े एक टब में और उसमें अंदर बिठाएंगे. जो लोगों को वेस्टिबुलर इश्यूज है उनको बैलेंसिंग धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे. सो लॉट ऑफ डिफरेंट. सो अगेन कमिंग बैक टू द सेम प्रॉब्लम कि जिस तरह का प्रेजेंटेशन है क्लिनिकली, उस तरह ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी उस तरह होगी, एक्सरसाइज भी उस तरह से डिस्क्राइब किए जाते हैं. एंड आई मस्ट टेल यू दिस कि दिस इज अ टीम वर्क. सो अगर ऑटिज्म को ट्रीट करना है तो एक साइकोलॉजिस्ट के साथ आप टीम अप कर लीजिए, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ टीम अप कर लीजिए. ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टीम में. एंड आई विल ऑल्सो रिफर समटाइम्स केसेस, इनफैक्ट उल्टा होके आता है, बट समटाइम्स यू माइट नीड टू इवन refer to a pediatric neurologist. So it is a teamwork. So if you see my website, you will find that we are a team. We have put up a team of psychologists, of occupational therapists. So we all together come, and it's a multidisciplinary approach that we adopt. Then you will get the best of the results. Otherwise, very difficult. So we are already 40 minutes. Any more questions? It would be good to take up questions like these, and because ये autism इतना बड़ा टॉपिक है कि हम घंटों तक बात कर सकते हैं इस पर. ओके. सो थोड़ा स्पेसिफिक होम्योपैथी के बारे में बताऊंगा मैं. जो बच्चों में हमने देखा है कि बिहेवियर ऑल्टर हुआ है, बहुत सारा बिहेवियर इमोशनल कंपोनेंट होते हैं ऑटिस्टिक बच्चों में, दो दे आर ऑटिस्टिक. तो जब इमोशनल कंपोनेंट्स दिखते हैं केस में और क्लियर बिहेवियरल सिम्टम्स हमें केस में मिलते हैं, देयर आर ऑटिस्टिक सिम्टम्स एंड बिहेवियरल सिम्टम्स arising because of this abnormality. For example, you will find that some children will be very, very attached to their mother or primary caregiver. Some will be very sensitive to music. Some will be very violent. So, some will be very fastidious. सब लाइट्स बंद करेगा, थोड़ा यहाँ रूम के बाहर पूरे घर में चक्कर लगाएगा, लाइट्स बंद करते रहेगा, जिसे हम ऑब्सेसिव ट्रेट बोलते हैं. रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर का एक पार्ट है. इन दीज पेशेंट्स the results have been by far the best. In children who do not have this behavioral component, prescription becomes little difficult. But still, you can still find individualizing symptoms in the case and still get a breakthrough. So, I remember a case where this child, right from the beginning, he would howl and scream his lungs out. जब he would howl and clinic में आता है,
क्लिनिक में एंटर हुआ है, he will scream. And the therapist also called me and said कि यहाँ therapy के लिए आया, and he will scream. He is so called me and said कि यहाँ therapy के लिए आया, and he will scream. He is so frightened, just doesn't want anybody coming even looking at him. As if he is in a cocoon, just doesn't want to get out of that cocoon. Nobody should come anywhere close. This child had very severe autism, and the therapist cannot do any therapy because of this issue. So we studied the case, and we gave this very interesting remedy, homeopathic remedy called curare, because curare has this fantastic symptom called shuts himself up completely from mankind. And after curare, this child started tolerating people, started making eye contact, the therapy he was able to receive therapy. He still is under treatment. But remember this, जब होम्योपैथी काम करता है तो एक स्टेप आगे लेकर आता है. जब थेरेपी नहीं आप अप्लाई कर सकते हो, तो होम्योपैथिक मेडिसिन कैन मेक यू रिसीव द थेरेपी. This is the point I said why homeopathy plays a very crucial role in treating autistic children. We can be of big help, and for all this training for myself, I want to express my deep gratitude to my teacher, Dr. Praful Barwalia, who has done pioneering work in homeopathy in Mumbai, and he runs this Spandan Holistic Childcare Center. And we have been in touch for many years, still continuing to be in touch and learning from him. So for the homeopaths, this should be an information. Also, the study must be from psychiatric textbooks where you read about autism, but more than reading is you will have to see in the clinic. And you will have to actually get yourself trained in seeing these children. It is not that easy to grasp the issues, even clinical issues and presentation of these children. So worth training yourself in a very focused way for this. So we have nearly 50 minutes in the conversation. I believe we will end it here. If there are some questions, I will still take up one or two questions before we end. And for my homeopaths students and colleagues and friends who are interested, every Friday I am doing a webinar on the therapeutic pocketbook of Bonninghausen. Yes, Kaplan Psychiatry is the book that is the gold standard book. And DSM-5, DSM-4 is what you read. Now it is time for DSM-5 TR. This will help you to understand clinically about autism. There is Synopsis of Psychiatry by Kaplan. There are big book, the 3-volume book of Kaplan, and then the synoptic volume also. But when you read Autism Spectrum, you will have to also delve into mental retardation and understand mental retardation. And you cannot you cannot escape deeply studying developmental physiology of children and the psychosocial development. How the
child develops and grows at the social level. If I use more technical term, how the ego evolves and develops. So one will have to have a 360-degree view of this neurodevelopmental physiology. So textbook of neurology, Victor Adams is recommended, and of course uh, pediatric neurology, I don't remember the name of the author, but these are some basic resources that you will need to study neurodevelopmental or disorders and autism spectrum. So one will not really be able to, just focus on autism and ignore all other things, because all other things will come together. This you will have to note, Dr. Dharma. So you'll have to embark and then start getting you will have to be wide, not just read the chapter on autism, and of course there will be metabolic disorders, genetic disorders that will invariably encountered when you study. uh, so genetics also you will have to brush it up when you really want to do a thorough study of autism spectrum. Right. So okay, so we stop here, and 12th of April we are celebrating Hanuman's Day, and we will do another live. So welcome all for that live too. And this of course will be posted on my channel. Do subscribe to the channel and Insta page, Insta handle. See you all. Take care and goodbye.